Yakti Parivar, c'est le jour 24. Faites la danse de l'harmonisation des sanskars. Le sujet de ce soir, incarnation de la tolérance, le signal Avyakt. Rappelez-vous toujours, c'est moi qui dois changer, pas l'endroit ni les autres. Pour cela, devenez une incarnation de tolérance. Ajustez-vous, mais ne vous éloignez pas. Même si quelqu'un est totalement anti, expérimentez sur lui avec toute la force de vos bons souhaits. Cela peut prendre du temps, mais le succès sera au rendez-vous et cela fera de vous une perle du chapelet de la victoire. Om Shanti. Écoutons maintenant Moïni Didi. Om Shanti. योगी जीवन की परिभाषा है मान अपमान निंदा स्तुति जय पराजय हार जीत La vie de yogi, sa description, c'est nous sommes égales en tout, क्योंकि que जो याद l'on है soit dans la louange चित्र भी ou बन जाए dans la défaite, छोटे बच्चे c'est égal. Je me souviens, dit Moïni, d'une photo कि फल नीचे गिरे de, तो पहले पत्थर ऊपर c'était de गिरते हैं petits-enfants qui lançaient des pierres à un arbre pour जैसे होते हैं recevoir le ऐसा fruit. भी व्यवहार Alors, il y करना avait d'abord la pierre et ensuite le fruit. लेकिन हमारे को Alors, सीखना peu पड़ेगा importe comment अगर euh, हम ये सोचें les gens agissent कि avec जो nous, quelle शब्द différence बोल la रहा है fera-t-il? सोच रहा है Alors, quelles que उसको soient les एक्सेप्ट paroles करना qu'ils है utilisent, कई बार d'abord, ऐसा हो ils le जाता है कि reçoivent. कोई कुछ बोल देता है Cela se passe पहले parfois तो que les उस gens व्यक्ति के disent quelque chose. स्वभाव संस्कार जो रॉयल Et व्यक्ति d'abord, होगा cette personne a un हमारे बाबा comportement महाराज कहते हैं lié au sanskar. धैर्यता और Par सहनशीलता exemple, बहुत थी on a l'exemple de Brahma Baba qui तो avait एक beaucoup de बार patience et जैसे beaucoup समय de प्रति समय कभी tolérance. कुछ होता था Et तो de बाबा temps को en temps, des choses se passaient. जैसे पंचायत लगती है ना पहले Et, पंचायतें होती हैं et जिसमें समाज के ही कुछ Baba व्यक्ति avait parfois des enfants गुस्सा ou होता les था gens तो de la सुनते थे société. और वो निर्णय करते थे Et तो il बाबा को passait un कभी jugement où il साथ donnait, में निर्मल शांता दादी प्रकाश वाणी कहती ou हैं entre eux, il parlait en बस mal de Brahma यही Baba. उन दोनों को सुनने के Alors, लिए बोला Dadi Prakash कि Mani आप et Nirmal सुनिए Shanti Didi तो जो दूसरा demandaient à dire quelque chose तो बहुत कुछ बोल रहा था et la personne qui और était अपशब्द भी बोल रहा था anti-Biquet बहुत disait कुछ de toutes तो sortes de बाबा choses दोष et दे il रहा था parlait avec un manque de respect. बाबा मुस्कुराते रहे Et il देखते रहे blâmait सुनते Baba रहे बाबा ने एक शब्द et Baba जवाब नहीं दिया souriait, il ne disait rien. Il n'a नहीं pas तो dit un प्रोवोकेशन seul होती mot. है उत्तेजित होता है नहीं सोचता अच्छा भी इसको Sinon, il aurait समझाकर été en train de उसके दोस्त सुनाए provoquer. अपनी Mais non, बात सुना दे il ne disait rien. तो बाबा सुनते रहे Et तो मनुष्य parfois, में बड़ा les gens, on प्रेम leur dit आता quelques है mots et ils en disent लेकिन ये plus. व्यक्ति तो Alors, Baba खामोश ne है faisait qu'écouter इतना सुना तो भी कुछ बोला et नहीं है इससे लगता है कि इसका चरित्र il बहुत entendait beaucoup de ऊंचा है choses, mais il ne disait rien. और Et il disait que आप भी इस la तरह की बातें personnalité कर de रहे cette हो personne était très, très तो élevée. दादी प्रकाश मैंने कही थी जो प्रभाव था बाबा सुन रहे Et थे alors, कुछ on, रिएक्शन on नहीं parlait de कुछ diffamation विरोध et नहीं करा l'influence que Baba मैंने n'avait देखा आप pas भी à कैसे हो आप भी तो réagir. कैसे हो Les gens मैं कुछ ना कुछ continuaient à तो parler, mais बोलता Baba ne रहा disait rien. तो एक अच्छा एग्जाम्पल Car था quelqu'un d'autre disait, vous êtes aussi comme cela. क्योंकि लगता था Et कि cela a été un bon exemple que Baba ne dise rien. ये तो देहाभिमान अपना अहंकार अहम Parce भाव que quand quelqu'un dit quelque सारा दिन chose, जवाब cela देना ne, चाहते हैं rien, कई rien ne se बार passe. C'est बाबा souvent सुनते seulement थे l'ego qui est उसको कोई dérangé. सामने से Alors, un आकर्षण jour, Dadika कर रहे थे Prakashmani était कि नहीं là नहीं इसको और ऐसा होना चाहिए ऐसा बहुत et सारे
quelqu'un l'a diffamé, il a dit: «Tu es comme ceci ou comme cela et tu devrais être comme बाद में ceci». हम बहनों ने Et हमेशा Daddy était लड़ते assis avec en silence आपने कुछ नहीं et बोला les सुनते plus रहे tard, les autres फिर sœurs ont दादी ने demandé: कहा बस «Daddy, करो pourquoi n'as-tu rien dit? Tu n'as que दादी ने écouté कहा मेरा तो ध्यान ही नहीं था वो et क्या tu ne कह रहा है faisais मैंने qu'écouter les देखा कि critiques». मेरे में Daddy कितनी a dit: «Je n'ai pas porté attention à ce qu'il a dit. मेरे में समाने की शक्ति है J'étais en train de vérifier le प्रेम type की ou शक्ति la है मैंने quantité de अपनी pouvoir que शक्तियों को j'avais, उसको ही les types de दिखाया pouvoir. Est-ce que c'était un कभी pouvoir हमारी d'aimer, un सफलता pouvoir ऐसी है d'accommodation ou d'adaptation?» कि C'est ce que je कुछ भी faisais कोई कहता comme है travail et ce sont les exemples qui sont devant nous. उसमें भी Alors हमें कोई que les gens disent quoi que ce soit, कि on doit किसी भी तरीके rester से et सहन écouter करना पड़ता है en कई बार patience शारीरिक रूप से et on doit le जो भी tolérer सर्दी गर्मी है mentalement, parfois एडजस्ट physiquement. करना पड़ता है लेकिन ये कहना Et है quand कि il बाबा fait, c'est इसने comme quand il fait chaud ou जब froid, नए on नए आए doit थे तो बाबा s'adapter. कहीं भेजता था तो किसी ने कहा वहाँ तो Mais au बहुत गर्मी début, होती है quand j'étais तो हमने कहा nouvelle, सर्दी गर्मी तो il faisait très सब chaud एडजस्ट कर là-bas et लेंगे Baba कहीं nous सर्दी a होगी कहीं dit, गर्मी होगी dans le Seva, dans le तो service, कोई लोग parfois एडजस्ट c'est नहीं froid, कर parfois पाते हैं c'est chaud, ce sont des choses कोई qui भी arrivent सुविधा किसी बात की et नहीं certaines होती personnes ne peuvent pas जो s'ajuster ou सहन कर s'adapter. सके Alors, si, सब s'ils n'ont सुविधाएं pas चाहिए les accommodements एक बाबा nécessaires, ils ne तरीका peuvent pas होता है tolérer la वो chaleur ou le कई froid. बातों में मन से तन से Et parfois, धन ce से sont des इसलिए हम facilités लोगों को de बाबा कहते हैं nourriture कि सहन parce शक्ति que आगे चल avec के l'esprit et तरक्की le कर corps, on सके doit pouvoir accepter, on doit avoir le pouvoir de लेकिन हम s'adapter सब parce अपनी que dans अपनी certaines परिस्थितियों में situations, si nous सहन करते voulons हैं उस progresser, समय बड़ी nous बात नहीं devons होती apprendre à tolérer. अपनी Et अस्तित्व à को ce moment-là, जागृत quand होना nous पड़ेगा tolérons, nous ne और उसमें sentirons सहन rien. शक्ति Mais on सबसे doit बड़ी है inculquer nos 8 pouvoirs हमें सदा याद et le रखना है pouvoir de tolérance est मुझे un grand खुद पे pouvoir. ढलाना है Et Baba dit, n'oubliez jamais on doit स्थान se को या changer दूसरों को soi-même. नहीं Ce n'est ni l'endroit अपने ni यहाँ les ही autres que रहो l'on doit changer. बहन के साथ Parfois, ils नहीं रह disent, सकते je ne vais pas rester ici, je ne peux pas उस rester avec cette परिस्थिति में sœur, je dois अगर quitter, आप je dois हट aller जाते हैं ailleurs. तो कभी तो वैसी Et परिस्थिति si on se आती है retire de cette situation, और अभी अगर पार कर certainement लो que cette situation peut तो बाबा revenir. की मदद Et से si कुछ अच्छा ही हो जाएगा on ne तो न तो स्थान si बदलना on पड़ेगा réussit cette fois-ci, मैं जब न्यूयॉर्क probablement आया avec Baba et avec कई le बार drama, il y लोग aura हमको quelque कहते chose ही de आए bon. Au début, quand je suis venue à New York, तो सब कहते बहन Moini, nous avions यहाँ क्यों plusieurs रहते हो यहाँ difficultés et तो tous nous इतना disaient, पोल्यूशन है यहाँ pourquoi तो est-ce que ये vous है restez ici? Il n'y a तो pas de बाबा यहीं तो pollution, नहीं il n'y a रहते rien जहाँ du मुझे tout. बाबा रखे तो मैं Et वहीं je रहती ne हूँ reste pas ici, Moini a बहन dit, यहाँ तो कहीं pour नहीं rester मैं तो ici, यहीं c'est हूँ Baba qui me garde ici. Je ne vais आज pas कितने nulle part, साल c'est हो गए ici que je vais rester. 40 साल से भी ज्यादा Et हो ça गए fait maintenant plusieurs années et ça fait भी plus de अच्छा है बुरा 40 ans भी अच्छा maintenant है et tout est bien. सफलता हर प्रकार Notre से बहुत esprit est अच्छी है bien, notre corps est लेकिन bien रोज चेंज et करते nous रहना avons पड़ेगा atteint le कि नहीं succès de मेरा toutes sortes de manières. मेरा इनसे नहीं Et बनती ça है change tous वो les करेंगे jours. तो हर जगह होगी Et ना tous les बाबा jours, on entend तो ceci ये ne बाबा va pas की bien, je ne peux pas m'adonner avec सहनशीलता cette personne, m'accorder avec अवतार cette बन personne. जाओ Et Baba a dit, अपनी c'est pour cette raison que परिस्थितियों l'on को doit devenir l'incarnation de la किनारा tolérance. नहीं करो Mais on ne doit बिल्कुल pas एंटी se retirer. उस Même पर भी si quelqu'un est नहीं complètement anti, on doit सो बाबा expérimenter का grâce à cette सपोर्ट से personne. ग्रैंड करो Et on va expérimenter समय sur lui लगेगा et avec toute la force de nos सफलता bons souhaits. अवश्य होगी Ça peut prendre du temps, mais le और succès आपको sera au भरोसा rendez-vous रखना et पड़ेगा cela fera कभी de vous une perle du chapelet de la इसलिए victoire. बाबा कहते हैं ना ड्रामा से प्यार रखो C'est pour ça que Baba a ड्रामा dit, में कर्मों का हिसाब किताब भी है जो भी दृश्य आता है dans le परिस्थिति आता drama, है il y a toujours उससे हमें कुछ le कुछ compte karmique. सीखने को On मिलता a है des comptes सीखने को karmiques avec मिलता le है drama. Quelles que soient les situations, on apprend आज भी beaucoup बाबा et le सिखाते pouvoir हैं augmente quand on बाबा apprend कहते de हैं nos karmas. गंभीरता से देखो Aujourd'hui, quand j'ai तो entendu, अनार दिखाई देगा Baba इसमें a dit, फल regardez-le. निकल और वो Si जब vous le फल दिखता regardez है तो d'une उसमें certaine बेनिफिट होता है manière, vous allez voir qu'il y a du ड्रामा को bénéfice en cela. साक्षी होके देख के Alors, on parle des अपने situations du समय drama. को स्थिर रखना Donc, nous sommes des बाबा observateurs से यही détachés. अंदर Donc, भी कहो इसमें भी कुछ पहले constamment, होगा इसमें भी कल्याण stabilisez-vous होगा dans votre esprit et rappelez-vous क्योंकि continuellement जैसे qu'il doit y जैसे avoir du हर एक आत्मा bénéfice के dans le drama. जो भी
Donc, on doit aussi l'utiliser de cette manière devant les âmes. Et peu importe qui sont ces âmes, on doit avoir de l'amour. Quel que soit leur rôle, quel que soit leur comportement, on doit toujours avoir de l'amour et des sentiments purs et des bons souhaits pour chacun. On doit devenir l'incarnation de la tolérance. Il ne faut pas croire que je dois tolérer ceci. Qu'est-ce que je peux faire? On ne doit pas avoir de fardeau. Alors, si on n'arrive pas à tolérer, c'est probablement une de nos faiblesses. Et si l'hiver est arrivé et que le corps est faible, vous allez sentir le froid. Et Baba a dit une fois que dans le yagya, dans pendant deux semaines, vous allez recevoir des tuteurs. Certains ont reçu du millet et pendant 2 semaines, vous devrez manger du millet avec du beurre. Certains ont dit: «On va le faire», d'autres ont dit: «Comment allons-nous le faire?» Et ceux qui étaient faibles, il n'y avait pas rien ne leur est arrivé et ceux qui avaient des pensées, des doutes, n'arrivaient pas à le digérer. Donc, comme leçon, on doit apprendre que ça doit être très bien, ça doit et maintenant, ils font avec du kitcheri grâce avec le babeur et le millet. Et avant, on pensait que c'était de la nourriture pour les oiseaux. Et aujourd'hui, c'est tellement cher, dispendieux dans la vie. Alors, et ça devient de plus en plus dispendieux parce que le babeur et le millet, c'est ce que l'on consomme. Alors, quand une situation se passe, on doit simplement garder notre statut immuable pour ne rien sentir quand les situations et les circonstances se présenteront. Certains ont l'habitude de critiquer, alors ils vont tout critiquer. Et je dis, faites ce que vous croyez qui est bien. Par exemple, ils disent, quand il y a de l'eau dans un verre, ils peuvent dire le verre est à moitié plein, à moitié vide, selon leur vision, selon leur perception. Et les deux sont là. Qu'est-ce qu'on dit? Qu'est-ce qu'on dit? Parfois, certains disent qu'il est à moitié plein, d'autres disent qu'il est à moitié vide. Alors, intérieurement, plus nous demeurons positifs, nous devrons regarder le drama avec un œil positif. Alors, dans toutes les situations, on pourra réussir, on pourra passer par-dessus. Et Baba dit, ça peut prendre du temps, mais le succès sera au rendez-vous. Et donc, on a expérimenté sur lui avec toute la force de vos bons souhaits. Ça peut prendre du temps, mais le succès sera au rendez-vous et cela fera de vous une perle du chapelet de la victoire. Et plus vous pouvez tolérer, plus vous serez rafraîchi, votre statut sera juste, mais sinon, il fluctuera. Et si vous voulez rester constant, cool et paisible, à ce moment-là, on a besoin de la vertu, même du pouvoir de la tolérance. Om Shanti. Om Shanti, si le mûrier vient que révisé à partir de 1969, multimillions de vertus et de bénédictions. Om Shanti. Alors, c'est le murli du 19 avril 1973. 13, 1973.
Alors, c'est des efforts pour la révélation. Dites-moi, combien de temps reste-t-il avant la destruction? Est-ce que cela aura lieu bientôt ou est-ce encore y a-t-il encore du temps? Aujourd'hui, c'est jeudi, c'est le jour du Sadhguru. Une conversation de cœur à cœur a eu lieu dans la région subtile. Quelle est la conversation de cœur à cœur? Quel est le niveau, le niveau actuel des efforts en termes de nombre? Quel a été le résultat? Dans le résultat, pour la première question, il y a eu 50% de personnes qui ont réussi. Et pour la première question, on vous a demandé l'importance de cette année. On vous a donné pour instruction particulière de rester sur le rénage souvenir et tout en restant au niveau aviaque, de rester sur le pèlerinage souvenir et de réclamer des bénédictions. Alors, à l'heure actuelle, avez-vous l'attention et la scène que vous aviez lorsque vous avez reçu la direction pour la première fois au début de l'année? Et une avez-vous maintenant l'étape spirituelle que vous avez expérimentée à travers l'atmosphère aviaque, les expériences spirituelles? Y a-t-il une différence entre votre niveau actuel et votre expérience? Ne pouvez-vous pas créer dans chaque centre une atmosphère attrayante qui vous attire même en rendant service? Le résultat de cette question est donc de 50% qui n'ont pas été acceptés. Le résultat pour la deuxième question était de 60%, ce qui était bon. Quelle était cette question? Eh bien, le résultat du zèle pour le service a été très bon. Mais où est l'équilibre? Si vous maintenez un bon équilibre, vous pouvez très rapidement devenir maître capable de donner à vos sujets et à vos fidèles le bonheur grâce auquel ils peuvent aller au-delà de ce monde à l'heure actuelle. Parce que votre propre niveau n'est pas très clair, vous n'êtes pas toujours en mesure d'entendre l'appel des démons aussi clairement et aussi attentivement, car c'est le résultat de la deuxième question. Et pour la troisième question est la suivante. Dans votre relation avec les autres, dans quelle mesure êtes-vous vous-même satisfait et tous les autres sont-ils satisfaits? Dans la mesure, alors, quelle mesure y avait-il un contentement? Alors, le travail continue pour avoir du contenu. Alors, une minorité a réussi dans ce sujet. Ils étaient parfois contents et pas du tout appréciés. Et aujourd'hui, ils ne non. Alors, on va continuer le murri demain. Om Shanti.